नमस्कार, आप सभी का स्वागत सायंकालीन सत्र में सायंकालीन वंदना, अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना। वे जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, धम्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, उन भगवान बुद्ध, धम्म और संघ की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। आदर पूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें। हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, उन भगवान बुद्ध का मैं अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, उस धम्म को मैं नमन करता हूँ। भगवान के श्रावक संघ, जिन्होंने मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित किया, उस संघ को मैं नमन करता हूँ। आइए हम भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना करें। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। भिक्षुओं की 4 मूलभूत आवश्यकताओं का विवेचन। फंदमयं तं खड़िकपत्रवेखन पाठं भरामसे। आए हम उस प्रतिक्षण विवेचन का पाठ करें। पठिसंख्या योनिसो चीवरं पठिसेवामि, यावदेव शीतस्य पठिघाताय उन्नस्य पठिघाताय दंशमकस्वातातपस्त्रींसप् सम्पस्सानं पठिघाताय यावदेव ह्रीकोपिन् पठिच्छादनंथं। बुद्धिमत्ता से विवेचन करके मैं चीवर का उपयोग करता हूँ। केवल सर्दी गर्मी से बचने के लिए, मक्खी मच्छर और सरीसृप प्राणियों, वायु और धूप के ताप से बचने के लिए एवं शारीरिक मर्यादा रखने के लिए। पठिसंख्यायोनिसो पिण्डपातं पठिसेवामि, नेवदवाय नामदाय नामण्डनाय नाभिभूषणाय
यावदेव इमस्य कायस्य कृत्या यापनाय विहिंसु परिथिया ब्रह्मचर्य अनुगहाय इति पुराणं च वेदनं पठिहंखामि नवं च वेदनं नापादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनवज्यता च आसु विहारो चाति बुद्धिमत्ता से विवेचन करके मैं भोजन का उपयोग करता हूँ, न आमोद प्रमोद न अहंकार बढ़ाने के लिए और न किसी प्रकार की सजावट के लिए, केवल अपनी काया की देखरेख, पोषण और स्वास्थ्य के लिए और ब्रह्मचर्य जीवन में सहायता के लिए। ऐसा विचार करके ही इससे पुरानी भूत की वेदनाएं समाप्त होंगी और नई वेदनाएं उत्पन्न नहीं होंगी, जिससे मेरी जीवन यात्रा दोष रहित और सुखमय होगी। पठिसङ्ख्यायोनिशो सेनासनं पठिसेवामि यावदेव शीतस्य पठिघाताय उष्णस्य पठिघाताय दंशमकस्वातातपस्त्रिंशत्सम्पत्सानं पठिघाताय यावदेव उतुपरिसय विनोदनं पठिसल्लानारामर्थम्। बुद्धिमत्ता से विवेचन करके मैं शयन और आसन का उपयोग करता हूँ, केवल सर्दी और गर्मी से बचने के लिए, मक्खी मच्छर सरीसृप प्राणियों से बचने के लिए, हवा धूप के ताप और ऋतु के प्रभाव से बचने के लिए और एकांत में रहने के लिए। पटिसङ्ख्यायोनिशो गिलानपच्यभेषज परिक्खारिं पटिसेवामि यावदेव उपपन्नानं वैयावादिकानं वेदानानं पटिघाताय अव्यापज्य परमता याति। बुद्धिमत्ता से विवेचन करके मैं रोग के लिए उपयुक्त सहायता और औषधि का सेवन करता हूँ। रोग से उत्पन्न हुई कष्टदायक वेदनाएं दूर करने के लिए और व्याधि से पूर्णतया मुक्त होने के लिए। श्रीलंका का एक पारंपरिक पाठ। प्रमाद मूल को लोभो, लोभो विवाद मूल को, दस भ्या करो लोभा, लोभो परम ही पेत को, संलोभं परिजानितं वन्देऽहं लोभकम्। प्रमाद का मूल लोभ, विवाद का मूल लोभ, दास बनाए लोभ, प्रेत लोक में ले जाए लोभ। जो लोभ को पूर्णतया जानता, उस वीत लोभ का मैं वंदन करता। विहंय मूल को दोषो, दोषो विरूपकार को, विनाशकार को दोषो, दोषो परम ही निर्यो, तं दोषं परिजानितं वन्देऽहं वेददोषकम्। परेशानी का मूल द्वेष, कुरूपता का कारण द्वेष, विनाश का कारण द्वेष, निरय लोक में ले जाता द्वेष। जो द्वेष को पूर्णतया जानता, उस वीत द्वेष का मैं वंदन करता। सब भग्ग मूल को मोहो, मोहो सब भीतिकार को, सब अंधकार को मोहो, मोहो परम ही स्वाद को, तं मोहं परिजानितं वन्दे हम वीतमोहकम्। सभी कष्टों का मूल मोह, सभी विपत्तियों का कारण मोह, मन के अंधकारों का कारण मोह, पशु लोक में ले जाता मोह। जो मोह को पूर्णतया जानता, उस वित मोह का मैं वंदन करता। Request to
carry forward the session forward, sir. Thank you. पहले थोड़ा समय हम आनापान करके चित्त को समाहित कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। 20 मिनट तक, 7:30 बजे तक हम आनापान करेंगे। तो आप निखिल जी 7:30 बजे घंटी बजा दीजिएगा। Yes, sir.
शांत चित्त से अब हम रिकलेक्ट कर सकते हैं अभी तक क्या किया और आगे क्या करना चाहिए। हमने 5 इंद्रियों, जो भौतिक इंद्रियां हैं, उनका जब स्पर्श होता है, उनका जब इंटरेक्शन होता है बाहर से, किस तरह से किन किन रूपों में तृष्णा जाग सकती है और कहाँ कहाँ हमें सजग होने की जरूरत है, ये हमने काफी डिटेल में हर एक आँख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर, हर एक के केस में, और हर केस में जहाँ जहाँ स्पेशल कोई आवश्यकता थी किसी स्पेशल मेडिटेशन की, वो भी हमने काफी डिस्कस कर ली। वो एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, कि सामान्य जीवन में हमारे साथ कभी एक इंद्रिय पे ही इंटरेक्शन वैसा होता नहीं है। There are always more than 2 interactions, और 2 तो बेरस्ट में होंगे। आँख से भी देखते हैं तो सुनते भी हैं कुछ न कुछ। अगर कुछ सुन रहे हैं तो देखते भी हैं साथ। अगर हमारा मोर ज़्यादा अटेंशन सुनने पे है तो वो दोनों जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उससे किस तरह से सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती है, किस तरह से एक दूसरी इंद्रिय का दूसरे पर असर पड़ता है, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और शिक्षाप्रद भी है, ताकि हमें पता चले कि हम अपने जो संस्कार जागा है उस इंटरेक्शन से, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर पाए, वो संस्कार किस पे जागा है। वो चक्षु के स्पर्श के कारण हो रहा है कि श्रोत के स्पर्श के कारण, कि जिह्वा के स्पर्श के कारण, एटसेट्रा। इन मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स की जो एग्जाम्पल बहुत बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वो भोजन करने की। भोजन करते हैं तो हर इंद्रिय इन्वॉल्व हो जाती है। आपको याद होगा, हमने एक माइंडफुल ईटिंग का वीडियो भी देखा है, उसमें समझाया था किस तरह से हर एक इंद्रिय भोजन करने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं निखिल जी से रिक्वेस्ट करूँगा तो वीडियो थोड़ा छोटा सा है, 4 मिनट का, शायद उसको दिखा दें। Savor Mindful Eating, Mindful Life is a book that is written to help people eat more mindfully and live more mindfully, so that it can help them to attain a healthier weight and have a more satisfying life at the same time. The 7 practices of mindful eating. The first one is honor the food. We take food for granted in a land of abundance. We go to a vending machine and it comes out. We don't remember where the food is coming from. The second practice is to engage all your senses, the taste, the sight, the beauty of the food, the aroma, the touch or the texture, the sound. What is in our mind when we look at that food? The third habit is to be mindful of the portion sizes. Do not take too much. Start with a modest amount. Get a dinner plate that's no larger than 9 inches, because the research has shown that the larger the plate, the more one would eat. The next practice is to chew. Chewing actually helps us to digest our food. The enzymes in our saliva will help us do that. And also, the taste comes from having the food in our mouth cavity, surrounding the tongue. So once we swallow it, we no longer taste it. Another mindful eating practice is to eat slowly. Eating slowly allows us to enjoy the food, to be able to taste it better, and also we eat less as a result. Research has shown that. Another practice is not to skip meals. It can backfire, because by the time
you come back from work at the end of the day, you start dinner, you are very hungry and tired, and you eat much more in one sitting than when you spread it out in a few meals. The last practice of mindful eating is to eat a plant-based diet. Research has actually shown that eating meat increases people's risk of colon cancer. वो जैसा शॉर्ट वीडियो में बताया भी गया कि विभिन्न इंद्रियां हमारी भोजन करते समय एंगेज होती हैं। सबसे पहले हम भोजन को देखते हैं तो चक्षु विज्ञान, चक्षु पे जो स्पर्श हो रहा है उससे वेदना जागेगी। इसलिए अगर भोजन ठीक से न लगाया गया हो, एक बेतरतीब फेंक दिया गया हो थाली में, तो उसको देख के सुखद वेदना नहीं होती, थोड़ा अप्रिय वेदना होगी और हो सकता है द्वेष भी जागे। तो जो मन की स्थिति बदल जाती है तो फिर भोजन के प्रति उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका टेस्ट, सब कुछ बदल जाता है। पहली तो साइट हुई, फिर उसको हम टच करेंगे तो टच की बात आएगी। उसमें टच में टेम्परेचर, उसका टेक्सचर, दे आल्सो मैटर अ लॉट। और फिर जब मुंह में डालते हैं तो भी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर माइंड स्टेट, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द फूड। तो वो चीज़ें भी हमारे भोजन के स्वाद को बदलती रहती हैं। और इस हिसाब से जो जिह्वा संस्पर्श वेदना है वो सिर्फ जिह्वा और भोजन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, मन की स्थिति पे भी डिपेंड करेगी। अगर उस भोजन को देख के आपको बुरा लगा, द्वेष जागा, उसके कारण जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस है वो सारी करप्ट हो जाएगी उसी हिसाब से। फिर हम जो खाते हैं तो उसका टेस्ट है भोजन का, वो अपना है। और टेस्ट भी सिर्फ भोजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। काफ़ी रिसर्च मैंने आज देखी जिसमें बताया गया कि जो टेस्ट है वो भोजन के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, भोजन के कैसे दिखता है उस पर डिपेंड करता है, भोजन की स्मेल कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और टच तो मैंने बता ही दिया, तो टच पे डिपेंड करता है। तो ये सारी जो इंद्रियों पे इम्पैक्ट हो रहा है वो सारी मिल के भोजन का एक फ्लेवर बनाती है। इसलिए आजकल जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भोजन के खाने में टेस्ट ना कह के फ्लेवर कहते हैं। फ्लेवर का मतलब उसमें सारी इंद्रियों का समुच्चय होके भोजन का एक्सपीरियंस होता है। उसमें बाकायदा पूरी साइंटिफिकली रिसर्च करके वेरीफाई किया गया कि हाँ इस तरह से इम्पैक्ट होता है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए, साधना के लिए क्या महत्व हुआ कि भोजन को देखने से, छूने से, उसके टेक्सचर से, जो चीज़ें रस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जिह्वा से स्पर्श से नहीं रिलेटेड, वो काया स्पर्श से रिलेटेड है, वो घान स्पर्श से रिलेटेड है। तो ये भी जो और कुछ हद तक शुरू में चक्षु स्पर्श पे रिलेटेड है। ये सारे स्पर्श भी अपना अपना इम्पैक्ट करते हैं और देन वी हैव ए complete experience of eating the food. And therefore, when we eat the food and we don't feel satisfied, और हमको लगता है भोजन अच्छा नहीं था या बहुत अच्छा था, there can be so many factors which will be responsible for it. अगर खासतौर पर द्वेष का संस्कार जागता है भोजन करने के बाद, तो आवश्यक नहीं कि वो टेस्ट के कारण ही हो, प्राइमरी फूड के इफेक्ट के कारण हो, वो उसकी प्रेजेंटेशन के कारण हो सकता है, उसके टेम्परेचर के कारण हो सकता है, उसकी स्मेल के कारण हो सकता है। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए कि क्या भोजन का रंग बदल दें तो उससे फर्क पड़ता है। तो ड्रिंक जैसे है,
कोई जूस पिया तो जूस को अंदर तीन का गिलासों में अलग अलग कलर का रंग डाल दिया, ये तो भोजन के रंग होते हैं, और लोगों को पी रहा है, पूछा गया, स्टैटिस्टिकली स्टडी की गई, तो दे गेव अ डिफरेंट कंक्लूजन फ्रॉम द फैक्ट कि ये एप्पल जूस पी रहे हैं कि कोई और जूस पी रहे हैं. दे कुडंट फिगर आउट बिकॉज माइंड गेस्ट कलर कंडीशनड बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ द फूड कि ऐसा होना चाहिए. In fact, in another experiment, they even found that the price which we pay in a hotel for the food, that also conditions the person and he begins to expect कि भोजन अच्छा हो. So many factors therefore influence our interaction with the food. And we may or may not be, unless we are very mindful, we may not be figure out कि ये भोजन खराब क्यों लगा, मेरा मूड खराब था, या उसने भोजन देने वाले ने ठीक से परोसा नहीं, ये ठीक टेम्परेचर पे नहीं था, उसकी स्मेल ठीक नहीं थी. So there are so many other factors which can create a negative impact or a positive impact in terms of craving. So how do we really discern it? एक तो इसको discern करने का एक जो important advantage है that we learn to dissect the experience into parts. भगवान की शिक्षा का जो धम्म विषय है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि हम अपने अनुभव को जो है उस अनुभव को तोड़ के देख पाए कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, which is a part of, as I mentioned the other day, proper attention, योनिसो मनसिकार. एक तो ये उसका लाभ होता है, और जैसे हम करते आ रहे हैं, जब कौन सी इंद्रिय है, उस पर स्पर्श हुआ, किस तरह की वेदना थी, किस तरह की संज्ञा थी हमारी जिससे ये फर्क पड़ा, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं. और जब हम इस तरह से किसी भी एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं तो हमारी आदत पड़ जाती है कि हर अनुभव को इस तरह से एक्सपीरियंस करें. जब जीवन में कोई दुखद अनुभव होता है तो रादर देन वेलिंग एंड रिएक्टिंग, वी ट्राई टू फाइंड आउट ये हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन. सो दिस इज द एक्सरसाइज इन practicing Dhamma Vichaya and trying to identify the cause of craving or cause of aversion. उसके लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि हम सब कोई भोजन करें, और भोजन करते हुए क्या अनुभव हो रहा है उसको सजगता पूर्वक देख पाए. And then we can share with each other and we can learn from each other कि हाँ इस तरह के इम्पैक्ट आते हैं हमारे भोजन के साथ इंटरेक्शन में, और इस तरह से राग या द्वेष जागता है. जब हम आहार प्रतिकूल संज्ञा की बात जैसे कल कर रहे थे, उसका तात्पर्य क्या है कि आहार के प्रति अगर बहुत ज़्यादा आकर्षण है, बहुत क्रेविंग है, और हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसको कम करने के लिए प्राइमरीली वो है, ताकि हम उस डायरेक्शन में एक तो शारीरिक इफेक्ट होता है और दूसरा हमारा क्रेविंग बढ़ती है, तो दैट बिकम्स अ कॉज फॉर enormous suffering in the future also. So there also we can figure out कि कौन सी चीज है जिसके कारण we can reduce the craving for the food. वो भी तभी पता चलेगी जब हम भोजन को एनालाइज करेंगे, भोजन खाने के एक्सपीरियंस को एनालाइज करेंगे. तो अभी 7:45 बजे के करीब है, तो अगर आपको जितना भी जिसके लिए संभव, you can actually take something, food or tea or whatever, and see कि कहाँ पे मुझे कौन कौन सी इंद्रिय इन्वॉल्व हुई और कहाँ पे उसके कारण कहाँ पे राग जागा, द्वेष जागा या नहीं जागा. That will be a good practical way of finding it out. Of course, we can do it now, then we can do it tomorrow during the daytime and a few times, and then we can share with each other कि हाँ इस तरह से मैंने अनुभव किया. जो भोजन का टेस्ट है वो सिर्फ भोजन पे डिपेंड नहीं करता. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसको हम टेस्ट कह रहे हैं भोजन का, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द फूड ओनली, डिपेंडेंट ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स. So you can't associate taste entirely with the food. So that has its own deeper connotations which you can reflect on.
So we'll have time for about 25 minutes or 25 minutes, 8:10 तो हम चाहें तो we can do that actually. In fact, that will be the best thing, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ तो होता ही है, जो हम सब लोग घर पे ही हैं. We can take out something and eat and see how the even sound will affect. For example, जब चिप्स खाते हैं उस पर रिसर्च की गई कि अगर हम चिप्स खाते हुए जो आवाज़ आ रही है उसको आर्टिफिशियली मैग्नीफाई कर दें तो क्या उससे भोजन खाने वालों का टेस्ट इम्प्रूव होगा. एंड दे एक्चुअली फाउंड दैट या हाउ मच इज द टेस्ट इज ए कंडीशन फैक्टर. कि उन्होंने आर्टिफिशियली उनको यहाँ पे हेडफोन लगा के दे एम्पलीफाइड दिस मेजर, उससे साउंड मेजर करके उसमें सिस्टम लगा दिया और वो कानों में एम्पलीफाई करके आवाज़ गई. And they said, yeah, this is much better than earlier, while it was the same, from the same lot of chips which they were given. So the sound also has impact, sight also has, every sense door is really involved in it. It's a very good exercise for us to learn how various senses interact with each other. So I'll stop here and then we'll meet at 8:10.
हाँ जी, दीपक जी कहिए। मैं ये कह रहा था सर कि एक फैक्टर जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, शायद हम मिस करके, शायद वो ये है कि जो हमारा परसेप्शन होता है खाने के बारे में कि ये हेल्दी फूड है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे टेस्ट को अफेक्ट करता है। अगर हमें लगे कि हेल्दी फूड है, तो अगर खराब टेस्ट भी होगा तो हमें उतनी एवर्जन नहीं होगी, और अच्छा टेस्ट होगा तो उसमें हमारा टेस्ट एनहांस हो जाता है। ठीक बात, वो तो इट इज अंडरस्टूड ना, परसेप्शन इज गोइंग टू प्ले अ रोल, वो तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो एक पॉइंट शायद रह गया, शायद आई डोंट नो, वो बाकी तो तो अंडरस्टूड ही है ना, हाँ जी, अंडरस्टूड है, वो तो है। बिकॉज परसेप्शन ऑफ the sense door interaction is integral to every sense door. जी, जी, भोजन के बारे में भी वो बात तो है ही है, ये चीजें दूसरी हैं। These things are pertaining to not the taste per se, मतलब जीवा स्पर्श की बात नहीं है ना, ये बातें हैं जीवा स्पर्श नहीं, हाँ माइंड का, ठीक है जी, आई थिंक नहीं, माइंड की बात तो है, वो परसेप्शन इज अबाउट रस ना। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा हाँ हटके है, लेकिन इट अफेक्ट्स, आई थिंक। Yeah, of course it will affect, certainly. आज अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन दोपहर को जो खाना खाया था तो मैं उसको एनालाइज कर रहा था अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से। तो 5-6 छोटे छोटे आइटम थे मैंने जो खाए, तो एक तो था कि वो कलर, तो सबके किसी के बारे में कोई वर्जन मुझे नहीं हुआ, और कुछ फ्लेवर भी ऐसा कोई खास नहीं था, नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं, फ्लेवर का भी कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया। लेकिन हाँ, वो रस जो है अलग अलग दिखे, और उनकी जो फ्लेवर से कलर, आप what do you imply by flavor? जो नाक पे जो आता है जी, सॉरी आई एम सॉरी, फ्लेवर को मिस कर गया मैं, स्मेल, स्मेल, हाँ स्मेल, जो नाक पे जो आता है फीलिंग, वो उतनी नहीं आई। कलर्स वर बाय एंड लार्ज फाइन विद मी। कोई साउंड भी कुछ आइटम में आई, वो भी न्यूट्रल सी थी। एंड मैं आइटम बाय आइटम बोलूं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो जैसे आप मुझे आदेश करें। तो जनरल ये था कि हाँ, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, टाइम आई विल सॉल्व एवरीबॉडीज टाइम इफ आई गो बाय आइटम बाय आइटम। थैंक यू। तो जनरल ये था कि भाई हमारा जो परसेप्शन है दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स व्हाट आई। थैंक यू। हाँ जी। Anybody else? Sir, my question is a little different. As a meditator, how about our evening or the dinner? Should we eat before 6 or before noon? In long courses, we practice it. Yeah. Um, It depends on the situation of the family, work situation, office work situation. Depends on so many things. Obviously, it is better to eat it as early as possible, but more than that, I won't be able to say, because it depends on so many conditions. yes. It depends on family situation, and then what time you sleep. Okay. Yeah. Thank you. Prasada, my thinking or reflection went in a slightly different direction. Ji. Because I thought, yes, all those the film that we saw told us how we should eat food, and then what you told us
told us that there are very many factors which affect the enjoyment of the food and the taste of it. But isn't it a matter of importance for us to also see where is a clinging, if at all, is happening? Where is the Trishna that is arising? And do we need to worry about that? Do we need to take care of that? Yeah, that's what I said in my remarks. Na? कि हम देखेंगे कि इन सब के मिक्सचर होने से टेस्ट में फर्क पड़ता है. Since we are discussing about taste, and then we can see if the temperature of the food is too high, then obviously there will be a feeling of heat, and then शरीर पे उसका असर जो काया स्पर्श हुआ वो अनप्लेजेंट होगा. अब उस अनप्लेजेंट के प्रति मैं द्वेष जगाता हूँ या उसको अनप्लेजेंट बोल के छोड़ देता हूँ, that will determine the subsequent action. So, similarly, with respect to all other things, with respect to smell, with respect to temperature, with respect to texture, with respect to sound. So one can get irritated with, while eating especially, because if you're hungry, you can get irritated with anything and create aversion. Usually aversions are more frequent than craving for the food. Yeah, unless probably I didn't appreciate that point in a very fine way. Thank you. Thank you very much. जैसे अभी मैं खा रहा था तो फूल मखाने खा रहा था, तो जो एक तो ऐसे थे जो they were not crisp, so I just couldn't eat them. It was very funny to see that. Not that they were spoiled, they were okay, but they were not crisp because when you press them in the tooth, the texture is such that it just starts sticking rather than breaking. I don't like it, so throw it away. The tea I was taking initially, it was good. Since I take slowly, by the time it finished, it was cold, so it didn't feel good. So the taste was changed because of temperature. Actually, research has shown that the overall flavor which we get of the food is strongest influenced by the smell, which sounds very strange because we rarely notice it. And the temperature. Because अगर हम भोजन हाई टेम्परेचर वाला करते हैं, जीवा के जो टेस्ट, साइंटिफिक रीजन ये है कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं. टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है. So then they become more receptive and they can taste things better. So if you consume something warm, then the bitterness will be more, sweetness will be more. जैसे आइसक्रीम है, हम जब ठंडी खाते हैं तो मीठी लगती है, जब अगर उसको पिघल के खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मीठी लगेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है. एंड आइसक्रीम वालों को उसमें ज़्यादा शुगर डालनी पड़ती है ताकि ठंडे में खानी है तो वही वो ठंडे में भी तो मीठी लगे. सो दे हैव टू पुट एक्सेसिव शुगर इन दैट. सिमिलरली अगर हम बेवरेजेस को गर्म करके पीते हैं then the taste is enhanced, but you may not like the temperature. So the sweetness may be enhanced so a juice taken cold may be of appropriate sweetness. If you warm it and take it, you'll find it is much more sweet. We can easily verify it by experiment. So, and from the point of view of Dhamma, what does it all teach us? What's the key teaching which you think one can very interestingly get from this simple study? एक तो ये बात है कि हाँ भी हम आइडेंटिफाई करें क्रेविंग कहाँ हो रही है, but there's something very fundamental which it tells us about the nature of our experience. Of course. Changing. Yeah, changing too is true. That's true. हमारी आवाज सब साफ नहीं आता. इंद्रियों का इम्प्रूव, इंद्रियों का हमारे पर जो कंट्रोल है. हाँ नहीं वो तो how figures of something. That we have been discussing all through, na? Actually.
हाल तुम कब अपना माइक्रोफोन ठीक करोगे बेटा? हाँ, कितने कितने महीनों से तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं उसे ठीक, माइक्रोफोन खरीद लो। अगर मैं उसे ठीक करती हूँ तो मैं आपको नहीं सुन सकती, आपके लिए स्पीकर लगाना पड़ता। हाँ, लगाना दोनों होने चाहिए ना, मैंने भी तो लगाया हुआ है, स्पीकर भी माइक्रोफोन भी, तभी तो ठीक से सुनेंगे। अगर आप सिर्फ लैपटॉप पे करेंगे, अनलेस यू हैव सम फैंटास्टिक लैपटॉप, इट्स वेरी, और यू हैव वेरी फैंटास्टिक ईयर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एनीवे, इट वाज जस्ट लाइटर माइंड। हाँ जी। For me, the biggest teaching was that the so-called taste, which is actually Jivva Samphasaja Vedana, is not dependent on food, is not dependent on Jiva only, it depends on so many conditions. So when you say Vedana Anatta, this is a very powerful example of that. It doesn't belong to the food, Jiva, neither to the Jiva nor to the food which is coming in contact. It belongs to the interaction of so many factors. So when you chant Vedana Anatta, then you think, yeah, Vedana Anatta का क्या मतलब है, कैसे experience होगा? This is how you can actually experience it. It's just not contained within the food. Normally तो यही सोचते हैं ना, भोजन टेस्टी है. इसे भोजन लेते हैं हम तो जीवा पर ही तो संबंध होता है हाँ, उसका, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना और कंडीशंस भी, गिव एन एग्जांपल। बता करो, टेम्परेचर अभी तो पता है मैंने, टेम्परेचर चेंज हो गया तो भोजन का टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप ठंडी रोटी फ्रिज में रख के निकाल के खाओ और फ्रेश ताजी रोटी खाओ, उसी रोटी को आधा पहले खा लो, फिर आधा उसको फ्रिज में रख के फिर खा के पता चल जाएगा। पर उसका हम इतना ध्यान, आपका टेस्ट का स्टैंडर्ड डिफरेंट है ना, there is a difference. Different, so everybody is different. Yeah, but if you have a good taste buds, then you can figure it out. आपको अगर चाय जो आपको गर्म पीनी चाहिए तो ठंडी देते हैं, उसमें टेस्ट में फर्क लगता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, खा रहे थे फूल मखाना, वो क्रिस्प नहीं था, वो चिपक रहा था दांत में, नहीं खाया गया, इसमें कोई खराबी नहीं थी, अदरवाइज शेप में बिल्कुल ठीक था। So the impact of other factors, that's what we are discussing, no? Impact of other factors other than the food, the primary food, on taste is so much. Enormous effect. But basic major to no, that's not, that is the sad thing, that's not major. Major effect is of smell. According to scientific study, major effect, overall effect is of the smell. If the smell is different from what we, and there is an effect ना हमारे मन में बैठा हुआ है कि इस भोजन की ऐसी स्मेल होती है, अगर वो उससे डिफरेंट हो तो you will not like the food. Smell is not of the vegetable, smell is of the masala. Whatever it is of the company. Whatever is the overall, जो हमारा perception है स्मेल के बारे में, वो अगर मैच नहीं होता, बेसिकली हमारी थिंकिंग से, परसेप्शन से एक्सपेक्टेशन बनती है कि भोजन ऐसा होगा, उसको देखने से, उसके कलर से माइंड मेक्स ए पिक्चर, एंड देन इफ इट डज नॉट मैच, देयर इज अवर्शन, एंड so the taste of the food becomes bad. No, it's not good. So that's what we are understanding, that there is an interaction of, we normally would think the food is very tasty. Yeah, that is the overall conclusion. But the taste of the food does not lie in the food only. It lies on other things which you have done. If you put on it good smelling things, it will taste you better. If you put it at a proper temperature, proper consistency, proper crispness, then it will taste better. अगर पोटैटो चिप्स आप सीले हुए खा लो, और तो मूंगफली आप सीली हुई खा लो, you don't feel like eating it. Taste gets spoiled. So क्या हुआ? वही मूंगफली थी जो गीली हो गई, अब आपको खानी जा रही, कल तक तो खा रहे थे, टेस्ट कैसे बदल गया? That is the point being made. So the taste is not primarily जिह्वा संपस्सया वेदना and the perception about this. Normally तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, जैसे जिह्वा पे स्पर्श हुआ, जिह्वा विज्ञान जागा, और उन दोनों के फस के कारण जिह्वा पे वेदना जागी, ठीक है।
जीवा संसपस्सजा वेदना, और उस वेदना को हम टेस्ट कहते हैं। तो हम सोचते हैं ये वेदना तो इन्हीं के कारण जाएंगे, बाकी तो कोई चीज है नहीं। टेम्परेचर कहाँ है इसमें, स्मेल कहाँ से आ गई? बट द फैक्ट इज दैट दे आर इम्पोर्टेंट, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट लर्निंग। सो जब हम कहते हैं वेदना अनत्ता, दैट्स अ प्रूफ, यस, वेदना इज नॉट belonging to thing, it belongs to conditions. So that's what I understood from this when I reflect on the eating process. जैसे eating. You have to argue. Yes, Rajendra ji, you want to ask me? मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि जैसे साउथ इंडियन फूड जो है वो कोकोनट ऑयल में बनता है. When a dosa is prepared and if it is on coconut oil, I rejoice it, I like it. उसका जो स्मेल है वही मुझे बहुत प्रेरित करता है कि मैं उसको खाऊं. और उसमें यदि फिर वो पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो का जो बनता है और उसके बाद उसको भुर्जी बना करके उसमें डाला जाता है, it is again the smell and you know the perception about the food which I have been carrying right from my childhood. But second thing which I want to know, compare the same ingredients are same, but in Kashmiri style we call it as sirchot. You know, it is the same, but it is cooked in mustard oil, and it doesn't. I don't like that taste. I don't cherish that. So वो मैं देख रहा था कि how the same. Of course, the style of making is different, but nevertheless, ingredients are same, and yet it looks so different. And the feeling, the perception, all are playing its role. It's not just eating the same food. That really matters. This is what we should not use the word feeling in a lighter sense. Feeling has a technical meaning, ना? Feeling को मत इस्तेमाल करिए. You're right. Our perception about a food, कि food ऐसा होना चाहिए, that will matter enormously. वो match नहीं करेगा तो we'll immediately have reaction of negativity towards it. So the food's taste will appear bad. वो तो एक बात हुई कि same food has different tastes for different people. One can say उनके taste buds में difference है. किसी की taste buds weak होती हैं तो उसको taste ज़्यादा पता नहीं चलता. किसी की strong होती हैं. जो food tasters हैं, they have very highly developed taste buds, so they can detect even smallest taste difference. We cannot. So that is another category of influences which we have not introduced here. That is also another factor. So essentially, the net result is that what we taste is conditioned by many factors. And same things applies to everything others. दूसरों में उतना स्पष्ट नहीं दिखता है. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि what you see is dependent by the sound, तो आप कहेंगे he's gone crazy. But it's a fact. I was also trying to experiment. अभी जब आपने कहा था तो मैंने एक मूंगफली जो है उसको खाया, उसकी साउंड को फील किया, उसके टेस्ट को फील किया. उसके बाद मैंने फिर वो केले के चिप्स थे उनको भी खाया, उसके भी साउंड को फील किया, उसको भी टेस्ट किया. और अल्टीमेटली जब वो उसको चबा करके मैंने बिल्कुल I found कि there was no taste at all, you know. वो initially the smell was there which attracted towards that particular food. तो स्मेल को फील करने के बाद उसमें उसके प्रति एक इच्छा जागी कि हाँ इसको खाया जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर इच्छा समाप्त हो गई. So we can see जैसे आपने describe किया ना, so what is our learning from it from the Dhamma point of view? That's the important thing. Learning is first, Vedana is impermanent, it keeps on changing. Same food, nothing has happened just by chewing. It mixes more with the saliva and then the taste changes. That is one thing. As Payal ne kaha, Vedana is changing. Food, Jivva Sampassaja Vedana is constantly changing, and we can verify it ourselves. Right. Then it is determined by so many conditions, not just by one-to-one.
ये नहीं कि जिह्वा और भोजन पे डिपेंडेंट है, ऐसा लगता है ना. When we read those sentences, it gives that feeling. But there is implicit that there are other factors, because Buddha also teaches us that no fact is caused by only one cause. There are multiple causes. And we can see those multiple causes here very clearly. So that's the beautiful training teaching we get. Vedana anatta, yes. And what in this case it is evident. In other cases it's very difficult. जैसे मैंने कहा कि conditionality of sight is so difficult. Object दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना, इसमें क्या conditionality है? But experiments have proved that if there is sound mixed up with it, जैसे audio visual होता है, then your sight gets disturbed. It's very amazing experiments. Yeah. Seeing the sight will disturb. If you focus on that, the audio will get disturbed. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब when a musician is singing from very deeply, he'll close his eyes. And when a person is listening, even to chanting, if he wants to listen thoroughly, he closes his eyes, because his mind does not go here and there. Otherwise, you are seeing something, you are hearing something, seeing, जो alternate होता रहता है. So we immediately know that this statement of Dhamma, that mind movements keep on arising, passing away, is very true. When you see a audio-visual, say TV for example, if you focus on sight, मतलब वहाँ पे कोई ऐसी पिक्चर आ रही है जिसको आप देखना चाहते हैं, क्या कह रहा है, कहता है इसमें छोटा बच्चा है, ये बच्चा कहाँ है, यहाँ तो थोड़ी है. So you try to focus more clearly, especially with eyes getting poor. So you have to focus clearly. हाँ है यार इसमें, and then you miss out what was being said accordingly. Similarly, if you focus कि words समझ नहीं आ रहे, so let me focus on the words, then the sight gets missed out. So it's such a tremendous teaching from Dhamma point of view, that yes, there are alternate mind movements which are arising, and हम averaging कर रहे हैं, उस averaging में गड़बड़ हो जाती है कभी-कभी. अगर हम एक ही चीज को फोकस करें तो कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, because mind movements तो बहुत तेज जाती हैं. So these are the kind, I mean, we want to analyze our experience and learn to analyze in the light of teachings of the Buddha. That is the, जैसे कल परसों हमने चर्चा की थी ना, wise reflection can be done in various ways. So this is the way of wisely reflecting on our experience, investigating it by part, breaking apart, doing Dhamma Vichaya, looking at it in the point of Four Noble Truths, looking at it from the point of Paticca Samutpad. When we say Phasa, Vedana, Tanha, it's all looking at it from the Paticca Samutpad. So in various ways, we are analyzing our experience, so that then in our life, when we feel the experience of suffering, and we want to analyze it before we react, we analyze it so that we know what exactly is the problem, isn't it? Yes, I think Apurva is here. He had asked me a question, so I'll answer his question now. That how do we experience cessation of suffering? हम कहते रहते हैं ना कि भाई कोई भी एक्सपीरियंस हुआ और बहुत मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, जैसे बहुत घनघोर सफरिंग हो रही, कोई bereavement हो गई, very major, tremendous loss in the business or some bereavement, then one is deeply in anguish. Now what do we do? So what we follow the Four Noble Truth paradigm. So we analyze it in that manner. We see, okay, there is suffering. Buddha says you must understand it. Okay, let me see what is the suffering doing. Mind is crying and there are thoughts arising. Then what is happening in the body? We see in the body, and slowly and slowly and slowly the mind stabilizes, and we know this is the cause of suffering. This is the tanha, this is the trishna which is causing suffering. And just by knowing that, it is, and if we have understood the teaching properly, we try to drop that. Drop that means we don't grasp that. The suffering starts falling down. Mind becomes calm and suffering ceases. So this is natural cessation of suffering. We are not running away from suffering. Chalo TV dekho yaar, chodo, bhul jao. Then that is called distraction. In emergency, that also is valid. There is no problem in it. But if you want to really experience the teaching of the Buddha, Four Noble Truths properly, what is suggested is you go through all these stages
understand suffering, find out the cause of suffering, drop that cause of suffering, and experience cessation. It is possible to do that. It may take more time, but that's how natural cessation happens, which means it ceases naturally. Not that we force it to cease by distracting our mind. Okay, so I hope I've answered your question, Apu. Sir, my question specifically was कि हम क्या मिस्टेक्स कर देते हैं कि इस प्रोसेस को हम इंटरप्ट कर देते हैं, जो नेचुरल सेसेशन हो रहा है अपने आप सफरिंग का भी है, हम उसको इंटरप्ट कर देते हैं. We don't give enough time. Firstly, we don't want to understand it. We think we know it. Because अब मेरा नुकसान हो गया तो मुझे पता है उसने मेरे साथ बेईमानी की है. So I think that is the cause, which is the apparent cause, not the real cause. That's where the problem happens. We see the cause of our suffering in the outside world. My cousin has died, enormous suffering. Obviously, that is the cause of suffering. No. Your attachment to the cousin is the cause of suffering. So that's the point. When the mind quietens down and you view it in the light of Four Noble Truths, then you will be knowing it. Then it will cease, not otherwise. That is the point. So if you don't look at it in that paradigm, it will not. Okay? Thank you, sir. Try it out and see. Yes, sir. Then you will gain confidence कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है. It's matter to be practically put into practice. Okay? Okay, I think we have crossed the time again. So maybe we do a little bit of chanting. Okay, I'll do again Sakatva. Huh? Nikhil, is that okay? Yes, sir. Sakatva buddharatanam osathang uttamang varam itang deva manuttanam buddha tejena sothina nasantu pandava sabbe dukkha upasamentu te Sakatva dhammaratanam osathang uttamang varam parilahu pasamanam dhammatejena sothina nasanti pandava sabbe bhaya upasamentu te Sakatva sangharatanam osathang uttamang varam ahuneyang pahuneyang sangatejena sothina nasanti padava sabbe roga upasamentu te Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sutting bhavantu te Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sote bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sote bhavantu te Harivam Sambha Sambuddho Bhagavad Buddham Bhagavan Abhiyāvi
Sakato Bhagavata Namam Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Thank you very much. Namaskar. Namaskar.